I was submitting before honorable member of this माइक bench, को प्लीज यूज करें. member of this bench, that despite provision of Article 191, Clause 3, the Supreme Court still possesses and exercises the power of under Article 184, 185, 186 to support my contention and submission. I draw your lordship attention to Article 184, Clause 3, Proviso. Article 184, Clause 3, Proviso. My lord, I am not reading Clause 1, 2, 3 because we all know. So, Proviso is a new introduction to this article. So, I want to read that. Provided that the Supreme Court shall not make an order or give direction or make a declaration on its own or in the nature of suo motu exercise of jurisdiction beyond the contents of any application filed under this clause. So, my lords, by this proviso, a clog is being put or power of the Supreme Court under 184 Clause 3, which is commonly known as a suo motu power, is being reduced, that it can only pass an order of nature of suo motu or can make a declaration on its own regarding a matter which is pending and an application contains that content. Beyond that, the Supreme Court, sir, it doesn't say the bench. अगर आपकी बात मान ली जाए, आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट अलग है और बेंच अलग है, तो इससे तो ये जाहिर हो रहा है कि सो मोटो पावर बेंच के बरकरार है, हाई कोर्ट से ले लिए गए, सुप्रीम कोर्ट से ले लिए गए. अगर ये होता तो ये आर्टिकल 199 रिपीट करता हूँ, आर्टिकल 191A में होना चाहिए था, क्योंकि पावर्स तो बज़ाहिर प्राइमा फेशाई 184 की 191A में जा रही है. मैं रिफ्रेश करता हूँ. अगर आपकी बात मान ली जाए कि सुप्रीम कोर्ट और बेंच अलग अलग है, तो इस प्रोवाइजो में जो सो मोटो के पावर लिए गए वो सुप्रीम कोर्ट के लिए गए, बेंच के नहीं लिए जी. नहीं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि बेंच के पास अदरवाइज सारे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स हैं, बेंच के पास मैं वो भी नहीं मान रहा. मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट डिस्पाइट 191A द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स आर नॉट बार्ड इन 184 एंड 185, बावजूद इसके कि 191 है, कंप्लीट बार नहीं है. कुछ पावर्स दी गई हैं बेंच को, नए बेंच को, मगर सुप्रीम कोर्ट has not been denuded of its powers. मैं ये कर रहा, वरना ये प्रोवाइजो यहाँ होना ही नहीं चाहिए था. सो मोटो पावर अगर सुप्रीम कोर्ट के पास अगर है तो सुप्रीम कोर्ट है तो पावर है. अच्छा लेनेट काउंसिल, एक क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो चुकी है, 191A आ चुका है और उसके नीचे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बन गए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को डील करते हैं. And now you are saying कि there should be a full bench. तो क्या उसके लिए हमें प्री अमेंडमेंट एरा में जाना पड़ेगा? एंड फॉर दैट मैटर 26th अमेंडमेंट को हमें सस्पेंड करना पड़ेगा पहले. देखें, सुप्रीम कोर्ट कभी भी डिन्यूड नहीं हुई ऑफ इट्स इनहेरेंट पावर. अगर कोई इशू आ भी जाए, आप लोग मेरे से बेहतर जानते हैं, अगर आप डिसाइड करें कि फुल बेंच को रेफर करना है तो चीफ जस्टिस के थ्रू कमेटी के पास जा सकता है, कमेटी के पास रेफर किया जा सकता है. उसको किस तरह बाईपास करेंगे 191A को? 191A has to be read with the whole constitution. मेरी गुजारिश ये कि बहुत सी जजमेंट्स में आपने फरमाया है कि कोई भी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड अलोन नहीं होती. It has to उसमें तो बाइफरकेट कर दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स शैल बी हर्ड बाय द बावजूद इसके, मैं अभी आपको बताऊंगा आगे जाके, बावजूद इसके यू आर स्टिल ए बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. यू आर नॉट सेपरेट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट.
अभी मैं आपको 187 के हवाले से भी कोई बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी अगर हम ट्रीट करें कि ये आप 184(3) को तो पढ़ रहे हैं, तो व्हाट वुड बी दी हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन इफ यू विल रीड 184(3) with article 191A sub article 3? ठीक है, you mean to say that the power of the Supreme Court or the bench or the suo moto as provided under article 184 are still intact? ठीक है, if you read this sub article 3 with sub article 3 of article 191A, there is a clear restriction that no bench of the Supreme Court other than a constitutional bench shall exercise following jurisdiction vested in the Supreme Court, vested in the Supreme Court. वो जो 3 को आप पढ़ रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट, उसको लाके यहाँ पे उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट। एक बात फिर आप पढ़ेंगे इसका सब आर्टिकल सब क्लॉज बी, appellate jurisdiction of the Supreme Court under clause 3 of article 185 where a judgment or order of the High Court involves constitutionality of any law or a substantial question of a law as to the interpretation of the Constitution and original jurisdiction of the Supreme Court under article 184 भी यहाँ ट्रांसफर हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को। तो जो आप बात कर रहे थे, द फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वर fully cognizant with this word Supreme Court. That is why they have mentioned in sub-article 3, no bench of the Supreme Court other than a constitutional bench shall exercise following jurisdiction vested in the Supreme Court. आपने जैसे शुरू किया आपने माना कि 1843 की जुरिस्डिक्शन तो है वो, अब आप कह रहे हैं कि वो सारी यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी। किसने कहा आपको कि वो है? 1843 तो आप फरमा रहे ना कि वो आज भी इंडिपेंडेंट है विदाउट प्रेजुडिस टू द आर्टिकल 191A. द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एंड एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इज अनदर थिंग एंड दिस 184(3) इज स्टिल देयर बिकॉज द प्रोवाइजो हैज बीन एडेड इन दैट। इसीलिए मैं सर अर्ज कर रहा हूँ कि अगर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सारी ट्रांसफर करनी थी बिफोर द बेंच, तो वो प्रोवाइजो यहाँ क्यों नहीं प्रोवाइड किया? ड्राफ्ट्समैन के लिए क्या प्रॉब्लम थी? तो ये तो फिर एक इंटेंशन ऑफ द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इंटेंशन ज़ाहिर हो रही है बाय द वे this expression and this proviso has been provided, and where it has been provided under article 184(3). जी वो क्या प्रोविजो दोबारा पढ़ दीजिए आप। दोबारा पढ़ लेते हैं जी। क्लास 3 के तहत we all know the Supreme Court has the power to pass order in nature of suo moto. The proviso says, provided that the Supreme Court shall not make an order or give direction or make a declaration on its own or in the nature of suo moto exercise of jurisdiction beyond the contents of any application filed under this clause. So by this proviso explicitly power of suo moto is being curtailed or reduced. Okay. So when they provided this proviso in article 184(3), at the same time, at the same juncture, they have already crafted article 191A in the constitution, and the entire jurisdiction of 184, including 184(3), has been transferred to the constitutional bench. Sir, please. अब Let इसीलिए उन्होंने me make myself clear. Sir, ये प्रोवाइजो जो है 26 अमेंडमेंट ने प्रोवाइड की है। बिल्कुल सही है, ठीक है, इसलिए ये यहाँ नहीं होनी चाहिए थी, ये 191 क्लास 3 के साथ होनी चाहिए। उन्होंने जब आगे लिख दिया वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट, वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट, यही में सब आर्टिकल 3 के अंदर 191A में when they provided this wording vested in the Supreme Court means whatever vested in the Supreme Court under article 184(3) that has been transformed to article 191A of the Constitution. इसकी चले for a second, it's an intellectual dialogue we are having. यहाँ रीजन क्या थी प्रोवाइड करने की? वहाँ क्या बार था, वहाँ क्या रुकावट थी? 191 क्लास 3 में क्या रुकावट थी? ये तो फिर अब उनसे पूछा जाएगा भाई, ये तो बात की बात है। बात ये है कि ये तो इस वक्त जो लिटरल इंटरप्रिटेशन इसकी है
मेरे हिसाब से जो टेंटेटिवली व्हाट आई एम हियरिंग यू, आप उसको बेस बना रहे हैं प्रोवाइजो को कि ये इधर है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का I have ज्यूरिसडिक्शन made my- अनटच है। मैं तो आपको उसकी बात कर रहा हूँ कि वंस देयर आर टू प्रोविजन 184(3) एंड 191(a) I have- that need to be harmonized for I- the purposes of I literal have- interpretation and the intention of the constitution framers. I have made my submission. I move forward. It's ठीक। up to you to take it or not. But I have whatever I feel. Okay, ठीक है, I that submit is the it. point, then we will answer. No, sir. Thank you. I refer to PLD 1997 Supreme Court. Relevant at 7 to 8. पहला पेज बता दीजिए Citation please. पहले Page, it starts from 700, sir. G. PFU General Insurance for this Federation. प्रीमियर इंश्योरेंस कंपनी। आप रेलेवेंट पेज कौन सा पढ़ जी रहे मैं रेलिवेंट पे आता हूँ, मुख्तसर करने के लिए 7 to 8 पे आ जाए सर। हैं? जी इसमें जो पैरा 18 है स्टेट पे, उस पे आ जाए। ये सर ब्रीफेस्ट कमेंट मैं पढ़ रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन फाइंडिंग जिसको भी आप कहें, ऑन माय पॉइंट of use of notwithstanding or its purpose and meaning. Now I read para 18, my lords, if you have got the book. प्लीज पढ़िए। Arguments had been addressed by learned counsel for the appellants as well as by Sheikh Haider representing the department on the non-obstant clause in section 10(7) of the act as well as section 26A of the ordinance. So this judgment was passed by my lord Nasir Aslam Zahid, deceased. A non-absent clause is usually used in a provision to indicate that the provision should prevail despite anything to the contrary in the provision mentioned in such non-obstant clause. In case there is any inconsistency between the non-obstant clause and another provision, one of the objects of such a clause is to indicate that it is the non-obstant clause which would prevail over the other clauses. Now, my lords, notwithstanding was used in 175A3, 191 clause 6, but not in 3 of 191. Intention is very clear that the bar is not a complete, and Article 191A still has to be read with Article 176 and other relevant 176 constitution किसमें आप which कह रहे हैं? relates to this part of the constitution and particularly part 1, chapter 1 of part 7 of the constitution. नहीं, तो- आप पहले इसमें पढ़ रहे थे ना 175, कहाँ पे आप पहले पढ़ रहे हैं? 175A में किस में? 175 175A सर देखें, 175A clause 2 reads how to appoint judges of the Supreme Court सब through the आर्टिकल commission. सब आर्टिकल 3 में है नॉन और ऑब्स्टेंट। क्लास 3 कहती है कि notwithstanding contained in clause 1 or clause 2, the Chief Justice of Pakistan shall be nominated by the Special Parliamentary Committee. So because the Judicial Commission has been barred for the appointment of the Chief Justice, and notwithstanding has been used. And this notwithstanding expression has not been used in clause 3 of 191A. Otherwise, it was very simple. Now, my lord, on this point,
There are two recent judgments. Supreme Court Bar Association, PLD 2004, Supreme Court 1. Relevant is at page 22. The other book is Islamabad High Court Bar Association, PLD 2023, Supreme Court 729 at 755. Now, my lord, both these judgments. Last का page क्या है? ये है सर, पेज है 729 से स्टार्ट होती है, रेलिवेंट है 755, 755 रेलिवेंट है. मैं दोबारा पढ़ दूं? नहीं ठीक होगी 729. No, my lord, in these two judgments, as we know, मैंने पेज लिखवा दी, मैं पढ़ूंगा नहीं to save the time, मैं बता देता हूँ. As we know, sir, in Article 48(1) of the Constitution, the Prime Minister has been given power to advise the President, and President is bound to act on the advice of the Prime Minister. But Clause 2 of Article 4, it says that notwithstanding anything contained in Clause 1 of this article, President shall act in his discretion. जो वो मामले इसी तरह सर 58 में पावर दी गई है डिसोल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली की टू द प्राइम मिनिस्टर कि इफ द प्राइम मिनिस्टर एडवाइजेस द president shall dissolve the national assembly, and if he does not dissolve after expiry of 48 hours, automatically national assembly stand dissolved. Clause 2 में ये कहा गया, notwithstanding anything contained in Clause 1 of Article 58, President may dissolve the assembly in his discretion when resolution of vote of no confidence has been passed against the Prime Minister, and in his opinion there is no other Muslim member who commands the confidence, so he can dissolve in his discretion. So मैं just mention ये कर रहा हूँ सर कि wherever bar or exclusion is meant, notwithstanding this has been used. I have given a chart wherever this word notwithstanding has been used, probably मैंने आपको दी थी, in 32 articles of the Constitution this expression has been used. Then, my lord, one young intellectual has written an article on this word, on this expression notwithstanding, using material from our jurisdiction, Indian jurisdiction, American jurisdiction, just to explain what does it convey. Now, my lord, I proceed. Now, my lord, I submit that, as I said earlier, sir, that Article 176 and 119A, they have to be read together. To explain why I'm saying so, I am referring a judgment, PLD 1988, Supreme Court 645, relevant page 663. So, when this Federal Shariat Court and Federal Shariat Appellant Bench were constituted 3A or 203A, and आप कहाँ से पढ़ रहे हैं जरा बता दीजिए. मैं पढ़ूंगा सर 663 से पढ़ूंगा, अभी मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ. जी ये फेडरल शरीयत कोर्ट, ये जब 80 में ये सारा सिस्टम आया तो जाहिर है कि इस पे भी बहुत केस आया, बहुत बहस हुई, बहुत सी चीज़ें चैलेंज हुई, तो बहुत सी चीज़ें रिजॉल्व की गई बाय दिस कोर्ट. नो सर, हियर वाज अ पॉइंट रिगार्डिंग द शरीयत अपीलेंट बेंच 663. ये
पैरा सर शुरू होता है 28:662 से, वहाँ से पढ़ लेते हैं सर, लंबा पैरा दिए हैं. The only remaining contention raised by the learned Deputy Attorney General to the effect that when a legislature in its wisdom makes a certain exception with regard to right of opportunity of hearing, as in the provisions in dispute, the court has no power under Article 203D/203F to examine such wisdom, or for that matter intention of the legislature is also without force. It is obvious that if the exception, or for that matter its purpose, runs counter to the injunctions of Islam as contained in the Holy Quran and the Sunnah, as already interpreted in the aforesaid case, the courts will be competent to take the necessary decision and declare it under Article 203D/20F of the Constitution. It may be mentioned here that as held in the case of BZK Kaus versus Federal Government of Pakistan and others, PLD 1982, SC 409, and Abdul Hamid versus the state, PLD 1983, SC 130, when the Shariat Appellate Bench of the Supreme Court determines matter brought before it under Article 203F, read with Article 203D of the Constitution, except for the relevant limitations contained in Chapter 3A of the Constitution, it continues to be the same Supreme Court as is visualized under Part 2, Chapter 1 of the Constitution. Part 7. In that context, it has the power under Article 1871 to issue such directions, orders, and decrees as may be necessary for doing complete justice in any case or matter pending before it, apart from other conditions, the expression complete justice in the context of jurisdiction of the court under Article 203F, read with 203D, would have to be in accord with the principle contained or derived from the Islamic provision. No, sir, they hold that despite the exclusive powers gazing to Federal Shariat Court, it is still part of the Supreme Court. And being the part of the Supreme Court, it can exercise power under Article 187 also to do the complete justice. No, sir, in Article 191 and in any other, let me complete, and any other article, Article 187 is not mentioned, whereas Article 187 is a helping hand. It covers the gaps to do the complete justice when this court has taken the cognizance. So, sir, if for a moment we think that this bench is not part of the Supreme Court, then Article 187, provision of Article 187 will not be available, and that will be great loss in the No, interest it is of justice. available. Article 187, the powers of the Article 187